अमाउंट आकर यहाँ में दे जाया कीजिए। मास्टर ने कहा कि पर ये तो बहुत अंधेर गर्दी। उन्होंने कहा पर है तो है, ऐसे ही है भाई, हम भी तो जिएंगे, तो हमारे पास कोई काम नहीं है, सरकार ने कोई काम दिया नहीं, अब बस दिया भी तो हम नहीं करना चाहते, हमें यही काम अच्छा लगता है, दिस व्हाट वी वांट टू डू, बट इज इट लेजिटिमेट? इट इज इलेजिटिमेट। तो जो सोवरेन है, सोवरेन के सामने इट इज सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी, उसके सामने कोई दूसरी अथॉरिटी उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, यू नो, एंड इट मीन्स दैट you are completely free to decide what you need to decide as a sovereign nation. तो एक नेशन को जब हम सोवरेन कहते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी ऑफ द नेशन विच इज सुप्रीम प्लस एब्सोल्यूट अथॉरिटी, which means this is what it means that they have supreme and absolute authority, and they have complete freedom. कैसे? internally plus externally. So internal और external दोनों ही जगह it is complete freedom. They're not under anyone's subjugation anymore. So if I have to take my decisions internally, I'll take decisions with complete freedom, not dictated by anyone else. That is sovereign. क्योंकि अगर मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं तो मेरे सामने जो दूसरा व्यक्ति है, he is undermining my sovereignty. Then I am not a sovereign. If I am taking decisions on somebody else's pressure or on somebody else's dictates, then I am not a sovereign. You know, I am just a puppet. But if I am sovereign, then my internal decisions, my external decisions, they are completely free. है ना? अब देखिए देश में कितना अच्छा से उन्नति हुआ कि सब जगह वीडियो कैमरास लगा दिए गए, कोई ट्रैफिक के लिए खड़ा नहीं रहता अब कि आपने स्पीड क्रॉस कर दी, ये कर दिया, कुछ पूछता ही नहीं है। पहले स्पीड के मार्कर्स लेके खड़े रहने पर पुलिस खड़ी रहती थी, फिर आपको पकड़ती थी कि स्पीड ओवर स्पीडिंग का चालान होगा। अभी कैमरा ने आपको देख लिया, सब जगह उसके लगे हुए हैं, उन्होंने सीधा आपका मैसेज बजा और उसमें आ गया कि आपको चलान है, और उसमें एक लिंक होता है, उसमें आप फोटो भी देख सकते हैं कि अगर आप डिस्प्यूट कर रहे हैं तो उसमें फोटो भी होता है जिसमें आपका भी थोड़ा सा चेहरा दिख रहा होता है, आपकी गाड़ी का नंबर दिख रहा होता है और स्पीडोमीटर में स्पीड दिख रहा होता है कि इस जगह पर आपकी गाड़ी कितने स्पीड से चल रही थी, ताकि आप उसको कंटेस्ट ना कर सकें। ठीक, अब कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मैं नहीं दूंगा चलान, तो पॉसिबल है क्योंकि स्टेट ने भेजा ना चलान, स्टेट सोवरेन है। आप उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज करेंगे तो यू आर बेसिकली बिकमिंग एन अथॉरिटी विच इज चैलेंजिंग द फ्रीडम, इंटरनल फ्रीडम ऑफ द सोवरेन हु इज अ सुप्रीम एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी। सो यू कांट डू दैट। जज साहब कुछ फैसला सुनाते हैं, आप मानते हैं ना? कोई ये कहता है कि नहीं तुम कौन होते हो बोलने वाले, हाँ हमारा परिवार का मामला है हम समझेंगे, नहीं होता ना, आपको मानना पड़ता है, चाहे आप हंस के माने या रो के माने, डजंट मैटर, बट यू हैव टू यू नो just abide by whatever is said by the judiciary. Why? Because that's a sovereign authority and it has complete freedom to decide as per the merits of the case and pronounce verdict. So you'll have to accept it. So who is the sovereign? Sovereign is the state. तो यहां पर यह बात दर्शाया गया है by this concept that if Indian state has to take some decisions internally, that is considering a decision that impacts the boundaries, that is confined to the boundaries of India, within the boundaries of India. So Indian state will be a sovereign state to decide everything within the boundaries of India. Now if Indian state has to decide anything which is external matter of the state, anything to do with foreign policy, anything to do with international relations, there also the decision of the state has to be completely free. Then it is a sovereign state. Okay, so Indian state, how does it behave? You are seeing that in internal decision making and external decision making, in both these decision making, the state does not operate on any other country's pressure or any other institutions or person's pressure. It is the sole independent sovereign decision of the sovereign state. So we wanted to create such kind of state that is India, because we were a colony. The constitution makers knew that a colonial state has always been a state without sovereignty. Who took our decision? All our laws were made in British Parliament. That was our plight. Now we are becoming free. So the first nature of the state is that India will be a sovereign state. We will not be actually dictated by any external influence, either in our internal decision or in our
external decision. That is why the Indian state decided to have non-aligned movement after independence. Why? Because Nehru ji said that if we moved either to block A, which was the US bloc, that is NATO, or block B, which was the Warsaw Pact, bloc led by the Soviet Union, then we will not be sovereign because our decisions would be compromised. Whatever we will decide, it will be as per the leaders' dictates. And so we have been enough under subjugation. After independence, we will not continue under any further subjugation. So we want to be sovereign state. So even that idea of a NAM is associated with India's concept of sovereignty. That's what it is. So in technical terms, political terms, we say that India was trying to show to the world that we are neither somebody's dependency, neither we are a dominion of any other country. We are basically declaring that we are a sovereign nation state. यानी हमारा सोवरेंटी पर आप कोई डाउट ना करें, ना ही हम किसी कंट्री की डिपेंडेंसी हैं, यानी किसी कॉलोनियल पावर्स की डिपेंडेंसी हैं, ना ही किसी कॉलोनियल पावर के हम डोमिनियन स्टेट हैं. वी आर अ सोवरेन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट हु इज कंप्लीटली फ्री टू टेक ऑल इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजंस. ठीक है, लिखिए. It means that India will be a free and independent state. It means that India will be a free and independent state which would take the decisions, which would take its decisions without any internal or external interference in its affairs. Next point. इसी point का next point, just put a small dash. India was neither a dependency nor a dominion of another nation. Next point. As per international law, a sovereign state can acquire or cede दे सकता है, और cede टेरिटरी. तो इंटरनेशनल लॉ में सोवरेन स्टेट को कहा जाता है, दिस इज लाइक अ सोवरेन राइट ऑफ अ सोवरेन स्टेट टू एक्वायर टेरिटरी फ्रॉम सीडेड बाय अनदर कंट्री, अनदर सोवरेन स्टेट, एंड ऑल्सो टू सीड इट्स टेरिटरी टू अनदर सोवरेन स्टेट. तो आप देखिए हमारा जो एक्सचेंज हुआ इनक्लेव्स का बांग्लादेश के साथ, इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, that took place in 2014, I think. It was 2014 or 2015 where the land boundary agreement took place. India passed the amendment, 100th constitutional amendment bill. Through that, they ensured that some territories from India, which was in India, it was ceded to Bangladesh, and some territory which was held by Bangladesh, it was ceded to India. So this is like a sovereign, you could say sovereign power as per international law. कि जो सोवरेन है वही सीड कर सकता है, लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ देश जो सोवरेन नहीं है वो भी सीड कर देते हैं टेरिटरी, विच डिफाइज द लॉजिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ. जैसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, सो इट इज ऑक्युपाइड कश्मीर ना. इफ यू लुक एट द टेरिटरी, कैन यू से दैट पाकिस्तान इज द सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द पीओके? नो. बट व्हाट डिड पाकिस्तान डू? They ceded a portion of POK to China. Sakshgam Valley it is called.
तो साक्षरकाम वैली दे दिया चाइना को उन्होंने, डिफाइंग एवरीथिंग दैट प्रिवेल्स इन द इंटरनेशनल लॉ. चाइना इज अ सोवरेन स्टेट, so China can acquire territory, but somebody has to cede that territory, but only that country which is a sovereign state. So this is against the international rules and norms, because that territory is not Pakistan's territory. ये ऐसी बात हो गई कि भाई आपको किसी ने अपनी स्कूटी दी है ना, और आप स्कूटी लेकर बैठे हुए हैं 2 साल से, और आप तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा कि हमें ना बहुत दिक्कत होती है अपने गांव से ऑफिस जाने में, उसने कहा ये वाली स्कूटी ले जाओ. But are you the owner of that scooty? So if you're not the owner, you can't give it to somebody now on somebody else's behalf. तो आप कैसे सोवरेन बन गए? तो सोवरेन में ये कहानी है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स में भी ये कहा गया है कि जो सोवरेन नेशन है, दे कैन acquire territory and they can also cede territory to another sovereign nation. Next point. When a state is sovereign, it means that it has undisputed legal authority over its territory, people, and resources. तो जो सोवरेन स्टेट है उसकी जो लीगल अथॉरिटी होती है ओवर टेरिटरी, रिसोर्स ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ दैट कंट्री, वो हमेशा अनचैलेंज्ड होता है. यू नो, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, देयर इज नो डिस्प्यूट ऑन दैट इशू. इसलिए अगर राज्य ने कुछ कहा तो हमको करना होता है, बिकॉज द स्टेट हैज गॉट अनडिस्प्यूटेड लीगल अथॉरिटी. यू कैन डिस्प्यूट द स्टेट कि नहीं, तुम मुझे नहीं कह सकते हो. फॉर दैट देयर इज राइट्स. तो राइट्स में स्टेट अगर वायलेट करेगा तुम्हारा राइट, तो देयर इज अ रेमेडी, enforcement है. But it is now I'm talking about a sovereign action of a state. So if the state has a legal authority, तो state जो होता है उसकी legal authority होती है towards the entire territory, all resources which is available in the state, plus over the people of the state. That is why if the state finds a resource in your house, then the state can acquire your house also. है ना, आप सुबह सुबह गए और अपने कुआं में बाल्टी डाला, उसमें से तेल निकल गया. आपको लगा कि ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया, फिर आपने एकदम पूरा छुपा लिया इस बात को, और आप फिर धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा तेल निकाल के आपने बॉटल में बेचना शुरू किया, अर्निंग सम वेरी नेसेसरी मॉनिटरी और द इंडियन रूपी और समथिंग लाइक दैट. फिर बाद में सोचा कि इसको अब विदेश में एक्सपोर्ट करके डॉलर में कमाया जाएगा. आप ये सब सोच ही रहे थे कि राज्य को पता चल गया, आपके पड़ोसी ने बता दिया. राज्य आया, उसने कहा कि भाई ये पूरा घर खाली होगा और केवल तुम्हारा ही घर नहीं टूटेगा, हम ये भी देखेंगे कि इस मोहल्ले में और कहीं कुआं है जिसमें कि तेल की संभावना है. और ये तो गया. Why? Because this is not your resource, even if it has emerged in your private space. This is state's resource. इसको कहते हैं एमिनेंट डोमेन थियरी. जो सब कुछ है इस धरती पर उस राज्य का है, तो सारा रिसोर्स राज्य का होता है, आपका रिसोर्स नहीं होता. तो हम क्यों? क्योंकि हम सोवरेन के लीगल अथॉरिटी को डिस्प्यूट नहीं कर सकते. डेफिनेटली ये सारी अथॉरिटीज लॉ में डिफाइन होती हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यूजिंग द वर्ड लीगल अथॉरिटी. वेरी नोइंगली आई एम यूजिंग इट, बट दैट्स व्हाट अ सोवरेन वुड एक्चुअली हैव द इन्फ्लुएंस ओवर its territory, over its resources that is found within the territory, as well as the people who reside within that territory. क्या करती है? हाँ, इलेक्शन. जैसे एग्जाम्पल, चुनाव तो हमेशा सरकारी स्कूल में होता है या उस तरह के. हाँ, तो अगर बूथ बन गया तो करना पड़ेगा, तो क्या दिक्कत है? हाँ, तो उससे क्या हो गया? सरकारी काम है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो कोई तो छीन थोड़ी रहे हैं. चुनाव ही तो करवाना है, चुनाव करवा के चले जाएंगे.
तो उसमें क्यों डिस्प्यूट होगा कोई? उसमें तो डिस्प्यूट होना भी नहीं चाहिए भाई। इतना बड़ा काम है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर मान लो नहीं है, तो उसने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज अ वेरी गुड स्कूल विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहीं पे एक पोलिंग बूथ बना लेते हैं। आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे तो गवर्नमेंट अपने ही स्ट्रक्चर्स में पोलिंग बूथ बनाती है। बट अगर बना लिया तो इतना बड़ा डिस्प्यूट क्या हो गया? ये तो उन्होंने कोई कब्जा थोड़ी किया, प्राइवेट स्कूल है उसी को वापस दे दिया, चुनाव करा के कहा कि भाई अब जाओ अपना रहो आराम से स्कूल में पढ़ाओ लिखो। ठीक। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टेट इज ऑल्सो सोवरेन ना इन इट्स बाउंड्रीज, no conflict of authority. Why can't? But you have two units of government also, na? Why conflict? You can have one authority when there is monarchy. You don't have monarchy anymore. हाँ, तो दोनों दोनों अथॉरिटी स्टेट ही है ना, तो देयर कैन बी ओवरलैप, वो एक अलग विषय है, दैट्स अ लीगल इशू, है ना। बट दोनों है तो स्टेट ना, अल्टीमेटली व्हाट यू कॉल देम। कोई प्राइवेट अथॉरिटी उसके साथ कर सकती है स्टेट अथॉरिटी, तो स्टेट टू स्टेट अथॉरिटी कैन ओवरलैप, देयर कैन बी प्रॉब्लम्स आल्सो, समटाइम्स वन स्टेट कैन हैव प्रॉब्लम्स विद द अदर स्टेट्स एक्शन आल्सो। अभी वेस्ट बंगाल में देखो बड़ी समस्या है। हाँ, तो आई मीन दैट इज विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितना कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करेगा करेंगे आप। पहले उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ ये एक्सरसाइज नहीं होगा, जो दी SIR एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज होने लगा, बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग टू स्टॉप इट। व्हाई? बिकॉज इट्स कम्स फ्रॉम अ सोवरेन डिसीजन ऑफ द स्टेट। जहां तक वो स्टेट उस सोवरेनिटी को चैलेंज कर सकता है, बिकॉज स्टेट इन देयर एरिया इज ऑल्सो सोवरेन एंटिटी। उस स्टेट इंस्टीट्यूशन को जब कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है तो कुछ पावर्स अथॉरिटीज के साथ बनाया है, बट इट हैज इट्स ओन लिमिटेशंस एंड सो हैज दिस अथॉरिटी अ लिमिटेशन। क्योंकि अब तो हम बात कर रहे हैं जिस स्टेट की, इट इज अ लिमिटेड अथॉरिटी, इट्स नॉट एन अनलिमिटेड अथॉरिटी। लेकिन सोवरेन डिसीजन इज अनलिमिटेड, विच मीन्स इट इज बियॉन्ड anybody's question. So when you are saying that a project was proposed between two states, suppose maybe there would have been issues for land acquisition, that is why the project would have been delayed. Maybe the other government which was in the other side of the state, they were not very friendly with somebody who was ruling the center. So these are like federal issues, and that can happen. That has, like, you can say it has like overlapping sovereign powers, which sometimes could lead to legal issues. But who will finally resolve these issues? By the legal instrument, the courts will resolve the issue. So you have a mechanism also. But yes, in India, sometimes the courts can take very long durations to resolve an issue. अभी कल से विवाद शुरू हो गया कि NCERT की क्लास 8 में एक चैप्टर आ गया, उसमें करप्शन ऑफ जुडिशरी, उन्होंने कहा कि ये तो लिख नहीं सकते, और मैंने सोचा कि मुझे तो ये बताना है बच्चों को क्लास में, तो फिर मैं भी नहीं लिखूंगा इसको। हाँ, तो कैसे बताऊंगा मैं? क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई तो बहुत गलत है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस होगा। तो पता चला मेरी क्लास की वीडियो वायरल हो गई, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। आई मीन व्हाट टू से? आई हैव नो वर्ड्स टू से बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ I mean, if somebody says justice delayed is justice denied, is it a criticism? It's a fair question. Anyone will say that justice delayed is justice denied. Now, with the same vein, if I show a data and I say that 5 crore cases are pending in the courts of this country, then does it not tell me that this is justice delayed and therefore it is justice denied? So, I mean, at least I think, what I personally think, that everybody should be open to some bit of criticism. I mean, you can't create an institution saying that this institution should be completely insulated from any kind of adverse comment or opinion coming from outside.
and this is coming in a textbook. So if factually there is something wrong, then I think it makes sense, but it's very subjective to actually think that you can't say that there is corruption in judiciary. I mean, it's very difficult to say that. Maybe there is no corruption in judiciary. Judiciary is a very pure, pious institution. But that is just an opinion. I have to also try to test my hypothesis also, that is it really corrupt or not? Are there corruption charges on people who are working in the judiciary or not? So there was a very recent case, Delhi High Court case. तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में थे ना वो, तो सॉरी दिल्ली हाई कोर्ट में ही थे, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर में कुछ आपत्तिजनक नोट मिल गए। अब ये सब चीजें बहुत टेक्निकल और लीगल होती हैं। आई मीन आउट हाउस में था, घर के अंदर तो नहीं मिला ना, तो वो भी एक सही बात है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने रख दिया, कोई उनको फंसाना चाहता हो, मतलब वी शुड गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल्सो। तो उसकी जांच होनी चाहिए, है ना, एंड लेट जुडिशरी टेक द लीड। जुडिशरी इतनी सारी चीजों की जांच कराती है, एक यानी कॉन्स्टिट्यूट कर देती है इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी टीम, और वो कहते हैं कि दिस इज लाइक जुडिशियली मैंडेटेड एक्सरसाइज। तो इसमें भी होना चाहिए था, एंड जुडिशरी वुड हैव डन समथिंग व्हिच शुड हैव बीन लाइक अ classic example to demonstrate something which may have been like an example for every Indians to be very proud of. But a common Indian, when he looks at all these things, he's a bit disturbed, because फिर उसको ये बताया जाता है कि नहीं अभी तो ये प्रोसेस में है, इस पर सुनवाई हो रही है या इस पर काम हो रहा है, तो then he is not able to connect all the dots, because yes, I know that there are more than 80,000 cases pending in Supreme Court, है ना, I know that there are roughly more than lakhs of cases pending in the high courts of the country, or more than 4.5 crore cases pending in the lower courts of the country. But maybe an ordinary person may not be knowing it. He would be very surprised कि मैं अगर कोई अपराध करता हूं तो मेरा तो जेल भी तुरंत हो जाता है, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि मेरा बेल कब होगा, छुट्टी कब होगा। But if you are like high and mighty in this country, then you are easily able to play with the judiciary as well. तो जुडिशरी ऐसा क्यों है कि किसी व्यक्ति के लिए जुडिशरी जो है वो रात के 12 बजे भी दरवाजा खोल देता है अपनी, और मैं चला जाऊं सुप्रीम कोर्ट के बाहर तो मैं तो किसी को पहचान ही नहीं पाऊंगा, मैं घुस भी नहीं पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट हैव मनी, आई कैन नॉट हायर अ वेरी हॉट शॉट लॉयर, अ बिग लॉयर। सो आई थिंक दीज इश्यूज नीड्स टू बी डिस्कस्ड, है ना, उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, जो है उसकी बात होनी चाहिए, और हमें यह भी कहना चाहिए कि इसको रिफॉर्म करें हम, टू मेक इट better. I'm not saying that the institution is bad. The institution is very good. They have done a great job as far as upholding democracy in the country is concerned. I mean, our higher judiciary, they have done exceptionally well. But they should not be perturbed by these kind of small incidents. यहाँ पर सोशल साइंस की कोई किताब होगी जिसमें लिख दिया कि करप्शन इन जुडिशरी, और वो 4 पॉइंट लिखा हुआ है, तो ठीक है, बच्चे को पढ़ने दो, लेट पीपल डिबेट ऑन दिस इशू, है ना। Let judiciary try to say that this is a classic example where now the government and judiciary should come together and try to resolve these issues. Kidney dependency na ho. We should take some major path breaking initiative or step. But कुछ नहीं कर सकते इसमें। और कुछ लॉयर्स हैं हमारे देश में जो रोज जुडिशरी के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे ये भी नहीं पता कि उसमें क्या नियम होता होगा। That can you entertain a lawyer every day? So every next day I see one lawyer arguing on some or the other issues in the judiciary. जो कोई मुद्दा लेकर के पहुंचते हैं, कहते हैं कि I am very perturbed. So if there is so much of pendency of cases, तो कुछ बड़े-बड़े cases भी तो होंगे ना। So these people are also eating up the time of Supreme Court of India. कुछ लोग तो PIL लेके जाते हैं, जो बिना मतलब की बात भी लेके चले गए कि हमारी भैंसिया जो है वो काफी समय से जो दूध नहीं दे पा रही है, तो इसका कोई हमको उपाय बताइए, या इंडिया में भैंस को बैन कर देना चाहिए क्या, इट इज नॉट गुड फॉर द कंजम्पशन ऑफ मिल्क इज नॉट गुड और समथिंग लाइक दैट। कुछ भी, मतलब एक अनाप शनाप कुछ भी, मैं मतलब कुछ भी के लिए बता रहा हूँ ये कि, तो ऐसी PIL भी तो समय वेस्ट करती है कोर्ट का। तो आजकल तो कोर्ट थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ है इस पर, अच्छा काम कर रहा है। कोर्ट कहता है कि थोड़ा फाइन देकर के जाइएगा आप, ताकि अगली बार इस तरह का फालतू चीज लेकर हमारे पास ना आए।
तो आई थिंक वो तो एकदम बढ़िया काम है कि कोर्ट ने एकदम डांट भी लगाया और उसको कहा कि कुछ मोटा फाइन भी दीजिए, बल्कि थोड़ा और फाइन बढ़ा देना चाहिए, अगर 2 लाख है तो उसको 5 लाख कर देना चाहिए, ताकि बेचारा अगली बार 10 बार अपना पीआईएल चेक करेगा दोबारा जाने से, कि कहीं 5 लाख का फाइन ना लग जाए। ये सब ठीक है, बट थोड़ा क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। मतलब आई थिंक नॉट टू एन एक्सटेंट कि इट वुड लीड टू अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी एक सम्मानित संस्था है, उसकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करके नहीं, बट there should be some fair, objective, rational criticism. That should always be a case. ठीक है? Next point. Undisputed authority, legal authority वाला लिख लिया ना, people, territory. हाँ. Next point. It has also sovereignty and independence. ये भी लिख लिया क्या? नहीं ना? It has also sovereignty and independence. Independence to take decisions. To take decisions without any internal or external influence. Next point. External sovereignty means sovereignty in the international sphere and independence of the state against other states. Next, internal sovereignty stands for the relationship between the state and the people, living in its territory. Next point. In modern era, sovereignty is considered one of the most important values of the state, so state tries to prevent any threat to its sovereignty. So state tries to prevent any threat to its sovereignty. Okay? So this is one explanation for the concept of sovereignty. Now comes the other part of the discussion, which is what are the challenges to sovereignty. आज के कॉन्टेक्स्ट में, आज के टाइम एंड स्पेस में, आर वी लुकिंग एट
sovereignty as a concept which is under threat, which is under duress, which is being challenged. So, for example, one of the biggest challenge to sovereignty, especially in the external realm, internal realm में तो चलो हम मानते हैं कि state is supremely powerful and there is no institution which can challenge the authority of the state. इसलिए कहते हैं कि state के साथ अगर कुछ आपने किया है तो state कभी भी आपको उसकी सजा दे सकता है. आप आज नहीं मिल रहे हैं, जब मिलेंगे तब सजा मिल जाएगी. आप स्टेट से भागे हुए हैं, छिपे हुए हैं, लेकिन स्टेट जब आपको पकड़ता है स्टेट आपको सजा दे देता है. ये हम समझते हैं ना. तो स्टेट इंटरनल रिल्म में आमतौर पर स्टेट को बहुत प्रॉब्लम नहीं दिखता. हमें दिखता प्रॉब्लम कहां है? ग्लोबलाइजेशन में एक्सटर्नली, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन दीज डेज. एंड सो critics have raised these point and they have said that today's sovereignty is not a concept which is like you can say that countries in today's world are 100% sovereign. You can just say that countries are sovereign, but you can't say that it is an idea which is a complete idea in itself, because sovereignty as a concept in today's world is diluted. It does not exist in purest form. Why? Because in the era of globalization, there are so many multilateral institutions in the world. For example, there is an IMF, there is a World Bank, there is a WTO negotiations that is ongoing. And then there are so many other multilateral organizations as well, like, your Conference of Parties, where you decide on certain issues, certain targets. Now, what does it mean? It simply means that I'm talking about global institutions. And in the era of globalization, there are many decisions which the state would take, but it would not be the decision of the state. It would be decision taken in global institution, and that decision is implemented in the state. Therefore, critics would say that in the era of globalization, what you do today is not the full sovereign decision of the nation state only. Your sovereignty is diluted, and so you have to accept decisions of multilateral, global institutions, financial, political, in order to implement their declarations also in your country. So what happens in today's world is that your sovereignty looks very compromised in the era of globalization. So suppose IMF में एक decision होता है, and because we are a member of IMF, so it is applicable on us as well. So Indian Parliament will make a law, but why they will make a law? Not because it's the decision of the Indian state. They will make a law because such a decision has been taken in IMF, and therefore to implement the IMF decision, you will make a law. So this is what the critics point out, that globalization has sharpened this idea that sovereignty is diluted in today's context, in today's times. But we have to take a different take. I have a different take on this issue. I still think that what we perform as part of a globalization also is a sovereign decision of the state. हम globalization में भी जो कर रहे हैं, that is sovereign. Why it is sovereign? So let's understand that. When we decided that we will join that particular institution, global institution, that was our sovereign decision. We were not forced to join it. We joined it because we thought that it is going to benefit us in one sphere or the other. Now, when the decision was taken, we were a party to that decision making, because as a member, we participated in the decision making. We are bound by the rules and regulations of the institution, which says that once a decision is made, every member has to abide by it. So it's our conscious sovereign decision that we have decided to be a part of it. Tomorrow, if we think that the institution is not serving our interest, then we can move out as well. Okay? There are so many countries who moves out of different institutions, global institutions also. Even Donald Trump moves out of institutions at his whims and fancies. वो कहता है कभी मैं इसका पार्टी हूँ, कभी कहता है मैं नहीं पार्टी हूँ, फिर मैं अपना ये अलग पार्टी बना लूंगा. तो it basically tells you that even though we are in the globalized era, but the decision to implement our decision from a multilateral institution, it has first emerged only after a sovereign decision was taken by you that you will abide by this decision, and therefore you are actually working as a sovereign nation here as well. So yes, it is true that you can't say mathematically that
this is like 100% 24 karat sovereignty. Sometimes you have to give and take, you have to negotiate as well. But that is part and parcel of international politics. So every country does it, but it does not mean that they are compromising with their sovereignty. So decisions that you accept is also accepted because as a sovereign, you have already decided that you will accept whatever decision is taken in this particular international multilateral body. Okay, so yes, it looks that it's a bit diluted, but we can still say that today, as I told you in the last line, that sovereignty is something which is a very strong value in today's politics, international politics, and every country tries to protect it. ये इंपॉर्टेंस है इस कॉन्सेप्ट का कि कोई भी देश अपनी सोवरेंटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कम व्हाट में। सोवरेंटी से कॉम्प्रोमाइज वही देश करेंगे जो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं किसी दूसरे देश पर फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में। बट if you are not into that kind of situation, then you can't say that you are actually a nation that compromises on your sovereignty. You do everything as per your sovereign calculation that is in your interest. If you accept the IMF recommendations when we went to seek loans from IMF, but to seek loan from IMF was our decision. And we knew that if we go to IMF, IMF will give us directions. And that will lead to changes in the economic policies of the state. But consciously we went there because we thought that it will serve our interest. It will bring us back into the stability that we were seeking for at the time under the era of instability in our economic realm. That is why sovereignty, although looks diluted in globalized era, but realistically if you assess it, it's still very strongly protected, guarded by every nation of the world. Okay? So ये challenge में लिख लीजिए. The external sovereign element is considered diluted because the state has to implement decisions taken into multilateral institutions like IMF, World Bank, etc. But next point, but it should also be noted that as a sovereign nation, we have decided to be a part of such an organization. Full stop. So we have also decided to accept the decisions which would be taken in such an organization. Therefore, even those decisions are the decisions of
decisions of the sovereign nation state. Again, if you look at the फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ एक आर्टिकल है फंडामेंटल ड्यूटी में 51 क्लॉज ए सब क्लॉज सी, और इसमें लिखा हुआ है दैट इट इज अ ड्यूटी विच द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्टोज ऑन एवरी सिटीजन, एंड अगेन फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट इन आवर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन एडेड बाय अगेन 42nd अमेंडमेंट. इसे देखो कैपिटल ए लिखा हुआ है, ओरिजिनल होता तो ये स्मॉल ए होता, बट ये क्लॉज में अगर कैपिटल लग गया तो इसका मतलब है इट हैज बीन एडेड बाय एन अमेंडमेंट. तो ये इंसर्ट किया गया जब फंडामेंटल ड्यूटी में, तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ये जाता है दैट इट गिव्स अ ड्यूटी टू एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट द सोवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. सो आई मीन इवन इन द ड्यूटीज दैट इज गिवन टू अ सिटीजन, a very important duty that you have is to protect the sovereignty and integrity of India, which means as a citizen you should ensure that your actions do not lead to a compromise with the idea of sovereignty and integrity of India. That's how importance we have given to the idea of sovereignty, that even citizens have a duty towards the state to protect the state's sovereignty and the state's integrity. Okay, Article 51A C, इसमें लिखो the Constitution places a duty, the Constitution places a duty on every citizen, to uphold and protect, on every citizen to uphold and protect sovereignty and uphold and protect sovereignty and integrity of sovereignty and integrity of India. ठीक है, sovereignty and integrity of India. दूसरा ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सोवरेन. तो सोवरेन को हमने दोनों कॉन्सेप्ट से देख लिया कि सोवरेन का मतलब क्या है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एंड देन what is the challenge to the concept of sovereignty as per the recent changes that we see in the global sphere, which is about the forces of globalization. They have diluted the very idea or the concept of sovereignty. Now it comes to the next nature. This is actually added later, but the word is socialist. अब ये एक typical political concept है. It's a political philosophy concept derived from the idea of socialism. तो सोशलिस्ट है क्या? अब इसको समझाने में सबसे पहले हम जो एग्जांपल देते हैं वो ये है कि सोशलिज्म की दो वैरायटी है एक्चुअली दुनिया में. सोशलिज्म के साथ आमतौर पर लोगों को लगता है कि इट इज बेसिकली द मार्क्सियन सोशलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट. सो यू नो देयर वाज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर कॉल्ड कार्ल मार्क्स. कार्ल मार्क्स, कार्ल नहीं, कार्ल KRL, कार्ल नहीं, कार्ल वाला कार्ल नहीं, कार्ल मार्क्स. So Karl Marx had given a philosophy. In his philosophy, he talks about communism. Okay? So Marx is a very profound political philosopher, which means, I mean, there are very few people in the world with a philosophy dedicated to their name. You see liberalism, so there are so many people who talks about liberalism. There is like an idea of feminism. But Karl Marx talks about an idea, and that idea is called as Marxism. So that is the beauty of the idea or the power of that idea. There are other philosophies also. For example, if you see Gandhi, his idea is also called Gandhism. So we have like one person from India as well who is into that same league. But let us look at socialism. So Marx basically, throughout his life, he's trying to understand the concept of inequality in society. What type of inequality? He's looking at inequality, and he says that he has found the reason for inequality in society. He says the reason is basically only one thing, that is people who possess material and people who do not possess material, which means people who have resource, who control the resource, and people who depend on those people who have resource or control over the resource.
That's where you have class distinction in society. You know? So now Marx, throughout his life, he's trying to find out that how he's going to make an equal society, so that there is no people with resource and people with no resource. But on the other hand, he wants to eliminate this resource distinction between the people. And for that, he takes a revolutionary path. And he writes a Communist Manifesto and he says, laborers of the world unite. You have got nothing to lose but your chains. है ना, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के. तो वो क्या कर रहे हैं? He is basically coming up with an idea where he is saying that you have to first organize yourself so that you can fight those people who have resources. So he's basically talking about revolution. You know, so he says that after revolution, what is going to happen? He says after revolution, you can't create an equal society in one day. So you will have to undergo the transformation to communism through socialism. Then what will happen in that socialism? He says revolution हो गया. You have defeated the capitalist, the bourgeoisie he called it in German. उन्होंने कहा bourgeois class को आपने हरा दिया लड़ाई में, revolution किया. You have dismantled the state structure. State क्या है? कुछ नहीं है, bourgeois possess करता है. State में जितने institution है, they are all created by bourgeois to serve the bourgeois interest. तो उनकी logic जो है ना वहीं से शुरू होती है. He is basically telling you that the difference that exists in the class level in the society is all because there are few people who are rich. These rich people, they control all the resource, all the wealth, all the means of production, all the forces of production, and they are the ones who creates the ideas like state, the ideas like jail, the ideas like police, the ideas like army, the ideas like education, the ideas like universities, even the ideas like religion. So everything is created by these people who have control over all the things that is related to resource. So they are the ones who are actually ruling the society. That's why you have class distinction in society. He says we have to try to find a solution to it. क्योंकि ये रियल फ्रीडम नहीं है. फ्रीडम तब आएगा जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा. ग्रैंड आइडिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. इंप्लीमेंट कैसे होगा? रिवोल्यूशन, और दूसरा रास्ता नहीं है. बिना क्रांति के नहीं हो सकता. So he talks about revolution. Now revolution हो गया, फिर क्या करें? He says now people who have undertaken the leadership roles in revolution, they will rule the country now. They will govern the country. तो यानी स्टेट होगा, थोड़े समय के लिए होगा. कब तक होगा? जब तक कि सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी खत्म ना हो जाए, जितने रिसोर्स हैं वो स्टेट की ना हो जाए, और स्टेट फिर उस रिसोर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट करे. हर व्यक्ति जिसकी जो क्षमता, जो जितना काम कर रहा हो, उसके हिसाब से हम उसको रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें. उन्होंने कहा ये कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं है, अभी भी समानता नहीं आएगी क्योंकि स्टेट है. जब तक स्टेट है तो यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण कर रहा है. They're exploiting the other. So you want to dismantle the state also. तो ग्रेजुअली उन्होंने कहा अब जो होगा, अब मार्क्स उसके बारे में कुछ नहीं लिखते. यहां पर थोड़ा सा फिलॉसफी कमजोर हो जाता है. वो कहते हैं ये धीरे धीरे इट विल विदर अवे, स्टेट विल विदर अवे. अपने आप धीरे धीरे राज्य की जरूरत नहीं होगी तो राज्य खत्म हो जाएगा, और राज्य जब खत्म हो जाएगा तब कैसा समाज बनेगा? वो असल कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगा. यानी हर कुछ, हर रिसोर्स पूरा समाज मिलके उसको यूज करेगा, और हर किसी को उसके जरूरत के हिसाब से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो तुम्हें तुम्हारी पद के हिसाब से नहीं, तुम्हें तुम्हारे काम के हिसाब से नहीं दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारी नीड के हिसाब से दिया जाएगा. टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड. काम तुम वो करो जो तुम्हारी एबिलिटी है, पर रिसोर्स तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी नीड्स है. उन्होंने कहा ये है यूटोपियन समाज. तो मार्क्स एक यूटोपिया बनाते हैं, एक आइडियल सोसाइटी बनाते हैं कि ऐसा भी कभी होगा धरती पे जब पूरा समाज समान हो जाएगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, तब सही मायने में डेमोक्रेसी आएगी. अभी जो डेमोक्रेसी है वो फॉल्स डेमोक्रेसी है. तो ये जो सोशलिज्म बना, ये रिवॉल्यूशन के बाद बना. ठीक है, उसको हम कहते हैं मार्क्सियन सोशलिज्म. Marxian socialism is a product of revolution, where the state is controlled by those people who have been instrumental in the revolution. मार्क्स की भाषा में उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, मजदूरों की तानाशाही. दैट इज व्हाट ही कॉल्स. ये है मार्क्सियन सोशलिज्म, विच इज अ वेरी वेरी आयरन रूल. जहां जहां कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुए, सोवियत यूनियन में हुआ, फिर क्या बना? यही बना, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट.
उसके बाद स्टेट कभी विदर हो ही नहीं पाया, स्टेट और मजबूत होता गया और उन्होंने लोगों को खूब सताया। तो जिस एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए यह रिवॉल्यूशन हुआ था, रियल वर्ल्ड में जब यह रिवॉल्यूशन हुआ तो उसने और जम के एक्सप्लॉइट किया। माओ ने रिवॉल्यूशन किया चाइना में एंड देन क्रिएटेड dictatorship of proletariat, which means one party, one person rule. And what he did, he exploited the people to an extent that under his watch, it is believed that there were more than 6 crore people who were killed. Similarly, if you look at Russia under Stalin's watch, there have been more than 4 crore to 5 crore people who had been killed. Because people who opposed, चाइना में अभी भी होता है, you can't oppose, सरकार का अगर विरोध किया तो फिर अचानक से लोग गायब हो जाते हैं, जादू, यू नो। सो दैट इज समथिंग विच इज अ ट्रेवेस्टी, विच इज अ प्रॉब्लम विथ द मार्क्सियन वैरायटी ऑफ सोशलिज्म। तो ये एक वैरायटी थी, लेकिन ये वैरायटी कब होगा? इट विल ऑलवेज बी आफ्टर अ रिवोल्यूशन। ये रिवोल्यूशन कौन करेगा? रिवोल्यूशन बाय प्रोलेटारिएट्स। प्रोलेटारिएट्स मतलब वर्किंग क्लास, नॉट पब्लिक, वर्किंग क्लास। उनके लिए वर्किंग क्लास चाहिए था। अब भारत में वर्किंग क्लास तो था नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं था हमारे पास। तो मार्क्स ने कहा कि अंग्रेजों ने बड़ा अच्छा काम किया है, जब वो भारत पर शासन करेंगे तो वो यहां पर मॉडर्न इंडस्ट्रीज लगाएंगे, तब भारत में वर्किंग क्लास बनेगा, तब वर्किंग क्लास के अंदर कॉन्शियसनेस आएगी, तब भारत में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होगा। तो इसलिए कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है, इसलिए भारत का गुलाम होना बहुत जरूरी था। ठीक है, जस्टिफिकेशन देखिए आप। सो दिस इज आफ्टर द रिवॉल्यूशन। ठीक, अब ये रिवॉल्यूशन के बाद होता क्या है? देयर इज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। इतना आपको बस समझने के लिए मैं बता रहा हूं, आप घबराइए मत कि ये सब आपको याद करना होगा। बहुत बच्चे इसी बात से घबरा जाते हैं कि सर इतना चीज कैसे याद करेंगे। मत याद करो, बस खाली सुन लो। तुम्हें जो याद करना है, जो मैं लिखवाऊंगा वो ध्यान रखना है बस। अब इसी बात को लेकर के पूरे वेस्ट में बहस छिड़ गई, क्योंकि देखो रशिया थोड़ा ईस्ट की तरफ है यूरोप में, और इसके बड़े पोर्शन थोड़े वेस्ट की तरफ भी हैं। अब रशिया में जब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ तो यूरोप के लोग बड़े प्रभावित हुए इस आइडिया से। यूरोप के अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी, लोग उसके साथ, क्योंकि यूरोप में तो वर्किंग क्लास बहुत था। मार्क्स ने अपने किताब में लिखा था कि पहला जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होगा वो जर्मनी में होगा, यानी एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज में होगा। लेकिन एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज में कभी हुआ ही नहीं कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? तो वो लोग होशियार थे, कैपिटलिस्ट, पूंजीपति। उन्होंने देखा कि हमारे कैपिटलिज्म में प्रॉब्लम है, जो मार्क्स ने हमको बता दिया है कि वर्कर खुश नहीं है, हम वर्कर को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसके लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में वो काम करता है ना, बड़े इनह्यूमन कंडीशन में हम उसको रखते हैं। जैसे आप देखिए हमारे यहाँ जो वर्किंग क्लास हैं, गरीब लोग हैं, आप कहते हैं ना झुग्गी में रहते हैं। व्हाट इज झुग्गी? झुग्गी इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच टेल्स यू, स्लम इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच टेल्स यू दैट दे हैव टू लिव अंडर एक्सट्रीम harsh conditions, है ना। They don't have proper house to live in, they don't have proper water to drink, they don't have proper clothes to wear, you know, they face heat, cold, rain, everything, which means their condition is very, very pitiable. So these capitalist nations, they realized that some of the elements under Marxian socialism, I mean, we can't talk about it because he's talking about revolution. He's talking about an idea where all the resources are owned by the community. There is no private resource. उन्होंने कहा ऐसा अगर होगा तो समाज में काम कौन करेगा फिर, है ना। अगर मैं तुमको बोल दूं कि इस क्लास में जो पढ़ के आएगा उसको भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे, जो पढ़ के नहीं आएगा तो कोई पढ़ेगा अगली बार क्लास में? कोई नहीं पढ़ेगा। सो वेयर इज द मोटिवेशन टू वर्क हार्ड, यू नो, टू इनोवेट, टू मेक न्यू थिंग्स, यू नो, दैट इज द मोटिवेशन। सो समाज तो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें थोड़े सोशलिज्म में जो इन्होंने काम किया है ना, इसको सीखना चाहिए। ये मार्क्सियन सोशलिज्म जो रिवॉल्यूशन के बाद बनाया, कम्युनिज्म से पहले जो इंटरमीडिएट है, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट, जो रशिया में बना, जो चाइना में बना, दे सेड दैट वी हैव टू ट्राई टू लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम देम। तो उन्होंने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। बिना रिवॉल्यूशन के इलेक्टोरल पार्लियामेंट्री चुनाव में लड़के सोशलिस्ट पार्टीज बनी वहां, जैसे जर्मनी में बनी, हर कंट्रीज में बने सोशलिस्ट पार्टीज, और सोशलिस्ट पार्टीज चुनाव जीतेगी और दे विल इंप्लीमेंट द पॉलिसीज वेयर प्राइवेट प्रॉपर्टी विल एग्जिस्ट बट स्टेट विल आल्सो हेल्प द पीपल हु आर नीडी। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया कि राज्य तुम्हारी सुध लेगा,
तो वर्कर्स के लिए क्या बने, हाउस बने, तुम अच्छे घर में रहो। वर्कर्स के नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स रेगुलेट होने लगे कि तुम इतने घंटे काम करो, उसके बाद तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हारे लिए कैंटीन होगा, अच्छा खाना मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल होगा, है ना, तुम्हारी सुविधा के लिए चिकित्सालय होगा, which means you'll get hospitals, you'll get schools, you'll get aid, you'll get support by the state, and all of this is free. You don't have to pay anything to the state. So state will perform its duty, which means capitalism was all about that state did not interfere into the life of the people. लिबरलिज्म शब्द मैंने यूज किया था, याद है, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये 3 शब्द मैंने कहे थे। ओनली इफ देयर इज अ डेंजर टू दिस, थ्रेट टू दिस लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, देन स्टेट हैज टू इंटरफेयर, अदरवाइज its state is very non-interventionist. Now, in this order of socialism, the capitalist country decided that we have to interfere so that we can change the lives of those people who really needs our support. If we still follow a non-interventionist policy, then people who are, upgraded, they will rise further. But people who are lagging behind, we have to support them. Otherwise, they'll continue to lag behind. And then we'll not be able to create a progressive society. Society will have problems. There'll be discontent, there'll be anarchy. तो इसलिए वेस्ट में एक मॉडल बना जिसको हम कहते हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो पहली बात तो यह है कि जब हम सोशलिज्म शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिस इज द सोशलिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट दिस वैरायटी ऑफ सोशलिज्म। दैट इज, वी आर सेइंग एन आइडिया ऑफ सोशलिज्म विच वुड बी इंप्लीमेंटेड थ्रू डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो वो सोशलिस्ट पार्टीज जो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, और दे विल इंट्रोड्यूस सम एलिमेंट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसीज वेयर दे वुड एक्चुअली इंटरफेयर इनटू पीपल्स लाइफ सो दैट दे कुड ब्रिंग चेंजेस इनटू देयर लाइव्स हु नीड्स द हेल्प ऑफ द स्टेट। तो मोर और लेस वेस्ट में ये कॉन्सेप्ट जब आगे बढ़ा तो इट बिकेम अ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य। ब्रिटेन में इसको कहा गया दैट द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द पीपल फ्रॉम द वूम टू द टूम्ब। मां के गर्भ से जब तक कि आप टूम में बंद ना हो जाएं, ताबूत में बंद ना हो जाएं, तब तक राज्य आपके साथ है। आपको राज्य की जब जब जरूरत है, राज्य आपको खड़ा मिलेगा। पर ये सब कर पा रहे थे वो क्योंकि उनमें पैसा बहुत था, सारे कॉलोनीज को लूट कर पैसा ले गए थे, तो इसलिए वेलफेयर में कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही थी, आराम से, और देश में भी एकदम खूब बढ़िया ग्रोथ है, प्रोस्पेरिटी है, संचालन है। तो ये जो आइडिया था, इससे पंडित नेहरू बड़े इंस्पायर्ड थे, द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, है ना। उसकी एक वैरायटी थी, इट वाज कॉल्ड एज फेबियन सोशलिज्म, है ना। तो इसी में देयर आर सो मेनी स्कूल्स, उसमें से एक स्कूल था फेबियन सोशलिज्म का स्कूल, एंड नेहरू वाज इंस्पायर्ड बाय दिस आइडिया, नेहरू वाज इंस्पायर्ड बाय इट। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने सोशलिज्म शब्द लिखा तो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अब इन दोनों की थोड़ी वैरायटीज में चेंजेस देख लेते हैं कि क्या क्या अंतर है दोनों में। सो मार्क्सियन सोशलिज्म और इफ यू लुक एट डेमोक्रेटिक socialism. So what are the major difference between the two? So in these concept there is abolition of private property. आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती मार्क्सियन सोशलिज्म में, बिकॉज मार्क्स मानते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जड़ है सारी समस्या की, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो बुर्जुआ है, जिसके पास नहीं है वो प्रोलेटारिएट है। So private property यानी economic inequality is the source of all the inequality that you see in the society. इसलिए वो चाहते थे कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दी जाए then nobody will have property and then we could create a more egalitarian or equal society. ठीक है। Then in the Marxian socialism the means of production. So what is means of production? Means of production would be held by the state, क्योंकि स्टेट तो था ही, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके कंट्रोल में था? इट वॉज अंडर द स्टेट। व्हाट इज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? जिन चीजों से किसी चीज का उत्पादन हो उसको कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। So what are the major means of production that you see, in any state or society?
जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले जरूरी पड़ेगी कैपिटल की, है ना, मशीन की, ठीक है, उसके बाद रिसोर्स की। ये सारी चीजें कौन ओन करता है? ये प्राइवेटली ओन नहीं हो सकता, क्योंकि मार्क्स तो उसके खिलाफ है। कैपिटलिज्म में ये सब किसके पास होता है? एक व्यक्ति होता है ना जो इंडस्ट्री का मालिक होता है, उस इंडस्ट्री की जमीन, उस इंडस्ट्री की मशीन, उस इंडस्ट्री का पैसा, कहते हैं ना भाई, आजकल तो दो लोगों के नाम बड़े लिए जाते हैं। हा? तो अगर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं ना कि ये दुनिया के इतने नंबर पे आ गए, पायदान पे आ गए, दे आर द रिचेस्ट पर्सन। व्हाई? बिकॉज दे वॉट एवर दे ओन इज देयर पर्सनल मनी। बट हियर वी आर सेइंग नो नो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो कुछ भी आता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, which means what facilitates productions, either we can say factory, machines, land, raw material, capital, technology, ये सब स्टेट ओन करेगा, कोई प्राइवेट आदमी के पास ये सब चीजें रहेंगी ही नहीं। तो जमीन, लैंड, मशीन, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, लेबर, ऑल ऑफ दिस इज ओन्ड बाय द स्टेट। और कैपिटलिज्म में एवरीथिंग इज ओन्ड बाय द ओनर, विच इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट। तो मार्क्स इस सिचुएशन से आपको आगे निकाल लेते हैं। दैट इज व्हाट इट मींस व्हेन मार्क्स टॉक्स अबाउट हिज आइडिया ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म। और इसमें शासन किसके हाथों में होती है? तो मार्क्स कहते हैं थोड़े समय तक हमें डिक्टेटरशिप चाहिए ताकि हम ये सारा काम कर पाए, सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टेट के हवाले करें और फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करें वेल्थ का, ताकि जिसकी जो एबिलिटी है, जो काम कर रहा है, उस काम के अनुपात में उसको हम प्रे करें। तो दोनों में अलग प्रिंसिपल है। जब तक सोशलिज्म है, काम के अनुसार आपको पेमेंट मिलेगा, रिसोर्स मिलेगा। लेकिन जब कम्युनिज्म आ जाएगा, तब आपकी जो एबिलिटी, आप वो काम करो, आपकी नीड के हिसाब से आपको मिलेगा, काम के हिसाब से नहीं। टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। और अभी मिलेगा टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। ओके, दैट्स द रिडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला मार्क्स सेट हियर। बट शासन कौन करेगा? तानाशाही होगी। किसकी? वर्कर्स की, प्रोलेटारिएट की। मार्क्स ने कहा ये तुम्हारी डेमोक्रेसी से तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि मार्क्स ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। मार्क्स ने कहा कि आपकी डेमोक्रेसी में शासन किसके पास है? कैपिटलिस्ट के पास है। कैपिटलिस्ट नंबर में कितने हैं? कम है या ज्यादा? रिसोर्स हमेशा किसके पास होगा? छोटे लोगों के पास होगा, कम लोगों के पास होगा, लेस इन नंबर्स। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी, लार्जर नंबर। उन्होंने कहा यह ज्यादा अच्छी डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि कम से कम शासन किसके हाथ में आया पहली बार हिस्ट्री में? जो मेजॉरिटी है। और वो शासन किसके ऊपर करेंगे? अब किसके रिसोर्स लेंगे? वो जो माइनॉरिटी है। तो उन्होंने कहा ये सही डेमोक्रेसी है। जिस डेमोक्रेसी को तुम डेमोक्रेसी कहते हो, दैट इज नथिंग बट अ टूल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, अ मशीनरी फॉर एक्सप्लॉयटेशन। तो शासन कैसे होगा? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटैरिएट। प्रोलेटारिएट मतलब वर्किंग क्लास, वर्कर्स, है ना। अब सोचो, रशिया में इंडस्ट्री नहीं और वहां हो गया कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन किसने किया? किसानों ने। चाइना में कोई इंडस्ट्री नहीं, माओ किसके साथ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं? किसानों के साथ। और मार्क्स ने कहा रिवॉल्यूशन कौन करेगा? वर्कर्स। इसलिए रिवॉल्यूशन कहां होगा पहले? यूरोप में, वेस्ट यूरोप में, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सब, फ्रांस। लेकिन ये लोग इतने होशियार कि उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम ये थर्ड वर्ल्ड में करो, जहां सब किसान को तुम कम्युनिज्म का पाठ पढ़ाओ, तुम्हारी बात पढ़ के वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस्ड द सी चेंज, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? इट इज अबाउट मिक्स्ड इकोनॉमी। कुछ काम सरकार भी करेगी, ऐसा नहीं है सरकार नहीं करेगी, लेकिन प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी। रिसोर्स विल बी हेल्ड बाय पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगी। नो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है। स्टेट क्या करेगा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में? स्टेट विल प्लान एंड execute the plan for growth and development.
इसलिए 5 ईयर प्लान देखो भारत में, नेहरूवियन सोशलिज्म, कि स्टेट प्लान करेगा, एग्जीक्यूट करेगा सो दैट दे कैन अचीव द टारगेट्स ऑफ द प्लान. तो इट्स लाइक वेरी स्टेट interfered economic system which is created in the model of democratic socialism. Similarly, every goods and services, capitalism में आमतौर पे liberalism में it was provided only by the capitalists, private players. But under democratic socialism हर कोई तो नहीं खरीद पाएगा ना इलाज. अगर सारे कॉर्पोरेट अस्पताल से इलाज मिलने लगे तो बहुत महंगा होगा इलाज, गरीब आदमी अपने इलाज कहां कराएगा. तो इसलिए स्टेट भी गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो जो गरीब व्यक्ति है वो स्टेट के अस्पताल में जाके फ्री में इलाज कराएगा. पढ़ने की फीस बहुत लगती है, गरीब आदमी नहीं पढ़ पाएगा स्कूल में, तो स्टेट अपने स्कूल में फ्री में शिक्षा देगा. तो स्टेट इज प्रोवाइडिंग यू विथ एसेंशियल सर्विसेज, है ना. ट्रेन पे चढ़ना, देखो ट्रेन अभी प्राइवेटाइज देश में नहीं हुआ, तो ट्रेन पे आपको चढ़ना है तो सर्विस से बहुत एसेंशियल है. इतने सारे लोग कम्यूट करेंगे तो स्टेट विल प्रोवाइड यू दैट सर्विस. बट अमीर आप हैं, आप हवाई जहाज पे चढ़ सकते हैं, तो देयर आर प्राइवेट प्लेयर्स इन दी एयरपोर्ट सेक्टर. स्टेट भी था, अभी नहीं रहा. नाउ दे विल टेक यू, दे विल फ्लाई यू, यू नो. सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट स्टेट हैज अ मेजर रोल. स्टेट इज अ मेजर स्टेक होल्डर in delivery of goods and services in the in the democratic socialism model. So state is a major stakeholder in the delivery of goods and services. So state remains a major stakeholder, a great stakeholder in providing goods and services. And one of the important feature of this model, हमने प्लान कहा, इसी को हम कह सकते हैं the idea of a centralized planning. सोवियत में भी आप देखेंगे this experiment was very strong. They planned centrally. So Soviet was like another experiment, but in India also we see ideas of democratic socialism, the idea of a centralized planning. So the planning for the entire nation was done from the center, and then the state tried to achieve and execute those plans that would lead to the growth and development. So it's basically this kind of a model that is to be seen. So when India is writing the word socialism, we mean this variety of socialism, not this variety of socialism. But उस वक्त socialism शब्द लिखते तो दुनिया क्या समझती? We are this variety of socialism. क्यों समझती ऐसा? क्योंकि उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर में बटी हुई थी, है ना. ये लोग पूछते हैं तो फिर शुरू में क्यों नहीं लिखा? शुरू में लिख देते. इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ऐसा लगा इट विल सेंड अ रॉन्ग इंप्रेशन टू द वर्ल्ड, बिकॉज एट द टाइम अ कंट्री, द होल वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू कैंप्स, कैपिटलिस्ट कैंप लेड बाय अमेरिकans, द सोशलिस्ट कैंप लेड बाय द रशियंस. सो एट द टाइम सोशलिज्म वर्ड वाज अटैच्ड विथ मार्क्सियन सोशलिज्म, you know, like Soviet and its allies. So therefore what we did, we intentionally wanted to avoid the use of this word so that it does not create any sort of, you know, a contradiction in the minds of the other nations that India is adopting a path of Marxian socialism. Because mostly in the international sphere, socialism was largely identified as Marxian socialism because of the contest in the World War between two ideologies of liberalism and communism. That is why we avoided it. But when Indian government's programs and policies were so much focused on socialist ideas under Indira Gandhi's tenure, then, you know, considering the flavor of the governance, she wanted to also introduce this idea in the constitution as well. Although the constitution has so many space where it talks about our Indian brand of socialism. So therefore, even if you are not using the word, India was still following socialism because India had mixed economy model. India had a centralized planning model. India में उस वक्त state was providing all the goods and services. अगर आप देखें तो private sectors were very, very few and far between. Planning, executing, never achieving the targets of 5-year plan. That was what we were doing at the time. But still, you could say that India was actually run on the lines of socialism. But when Indira ji had introduced ideas like nationalization of banks, abolition of privy purses, you know, nationalization of the aircraft carrier, you know, like Tata's had the airlines, now it was Air India, and now it is reversed. Again, gone back to the Tatas, you know, so Air India. So
This is what was very hard stance on socialism. So you can say that impact of, like, India was very close to the Soviet also during those era. 71 we have a treaty of friendship with Soviet Union. So I think it was the time when there was so much of thrust upon the ideas of socialism under Indira Gandhi's tenure. So we adopted the word socialism. लेकिन इसका मतलब क्या है ये हम लोग अभी लिखेंगे आगे, पहले इसको लिख लीजिए. ये तो लिख लिया ना आपने, हाँ अब लिखिए. India adopted democratic socialism. India adopted democratic socialism and not the Marxian socialism, or मार्क्सियन सोशलिज्म को और हम कह सकते हैं कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म. Communistic socialism. Next point, the basic objective of socialism, democratic socialism, the basic objective of democratic socialism is to eradicate poverty, eradicate poverty, comma, ignorance, comma, disease, and inequality of opportunity. So these are the basic objectives of democratic socialism. Inequality of opportunity, इसको इरेडिकेट करना है हमें, इसलिए इक्वालिटी नहीं. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, democratic socialism also aims to achieve its goal, through democratic, comma, evolutionary and non-violent means. वहां पर क्या है, वायलेंस है, रिवोल्यूशन है. यहां हमारा क्या है, वी एम टू अचीव ऑल ऑफ दिस थ्रू इवोल्यूशन, डेमोक्रेसी एंड नॉन वायलेंस. यहां पर वायलेंस जरा सा भी हमें नहीं दिखता, मतलब डेमोक्रेटिक मीन्स से हमें ये अटेन करना है. नेक्स्ट, इट ऑल्सो मीन्स that since wealth is generated socially, comma, it should also be shared equally by the society. Through distributive justice. तो वेल्थ कोई एक व्यक्ति तो प्रोड्यूस कर नहीं सकता, इट्स द सोसाइटी विच प्रोड्यूसेस द वेल्थ. सो स्टेट को क्या करना है, इट हैज टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ टू द सोसाइटी, एंड देयरफॉर व्हाट विल स्टेट डू, इट विल परफॉर्म द टास्क ऑफ distributive justice. So one of the larger intentions of democratic socialism is to perform distributive justice in the society. That is how you are going to eradicate poverty, eradicate disease, eradicate hunger, and provide equality of opportunity for everyone to progress in their lives. Next point. Its mechanism
its mechanism, ITS, its mechanism ensures that, mechanism of democratic socialism, it बोलने का मतलब ये, ensures that the wealth does not concentrate, the wealth does not concentrate in few hands, यानी धन किसी खास लोगों के हाथों में, कुछ चंद लोगों के हाथों में संग्रहित ना हो जाए। ये भी एक एम है इस मैकेनिज्म का, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन पर बड़ा जोर होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर बड़ा जोर होता है, ताकि राज्य खुद सर्विस दे रहा है, राज्य खुद प्लान कर रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो राज्य का बड़ा रोल है। तो राज्य रेवेन्यू भी जनरेट कर रहा है और जो जनरेट कर रहा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ताकि समाज में कम से कम खाई हो क्लास के बेसिस पर, है ना। दैट इज व्हाट इट ट्राइज टू डू। सो इट बेसिकली ट्राइज टू इंश्योर दैट वेल्थ शुड नॉट कॉन्सेंट्रेट इन फ्यू हैंड्स ओनली, है ना, कुछ चंद लोगों के हाथों में धन इकट्ठा ना हो, ये कोशिश होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द कांग्रेस पार्टी adopted a resolution in Avadi session 1955. The Congress party adopted a resolution in Avadi session to establish a, इस शब्द को अंडरलाइन कर लेना, a सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। यानी उनका, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती थी कि वो एक सोशलिस्टिक समाज बनाए, है ना। सो दैट वाज व्हाट वी वर एमिंग फॉर। और सोशलिस्टिक समाज कैसे बनेगा? जब समाज के अंदर कम से कम डिफरेंस हो ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, है ना, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे पास दो आर्टिकल हैं, है ना, दो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत पहले से हैं जो डीपीएसपी में है, ठीक। व्हाट इज दैट? वन इज 39B and 39C. I mean, these are classic example of democratic socialism. That is why I said that even before, in 1976, we have introduced the word socialism in our constitution by writing it in the preamble. But India was always following democratic socialism because our constitution has designed itself on the lines and ideas of democratic socialism. Okay? And the best proof is these two articles in the constitution. 39B ये कहता है कि the resources are so distributed that it serves the common good, है ना। So control, ownership of material resources of community, they are distributed to serve the common good. यानी आम हित के लिए रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं। कौन करेगा? स्टेट करेगा। (39C) कहता है कि wealth should not concentrate in few hands. Ideas of democratic socialism through some instructions to the state under directive principles of state policy under 39B and C. There are so many other articles also. We'll discuss it gradually when we do DPSP. But these are the two significant articles that need not be avoided. ठीक है, लिखिए। Even before 1976, India was following democratic socialism. India was following democratic socialism as outlined in article 39B, small b, है ना, not capital, 39B and 39C. 39B को शॉर्ट में लिखो, क्या लिखा हुआ है? 39B. 39B ensures that ownership and control
ownership and control of material resources are so distributed that it serves the common good. Are so distributed that it serves the common good. Common good, GOOD, good. Common good, आम हित. यहाँ पे गुड का मतलब हित, अच्छा नहीं. 39C. The economic system shall be operated in such a manner. The economic system shall be operated in such a manner that wealth does not concentrate in few hands only. So that the wealth does not concentrate in few hands only. Okay? So even on socialism, there is a debate that in the era of liberalization, the idea of socialism is diluted because now the state is moving more towards privatization of resources. तो फिर राज्य तो कम से कम काम कर रहा है, बल्कि राज्य क्या कर रहा है? It is also privatizing many of its institutions and resources. It is reducing its delivery of goods and services to the people, especially after 1991. This is basically talked about. But you have to understand that our constitution has very much clarified. हमारा जो democratic socialism है, it is basically based on the notion that we have to fight with disease, inequality, hunger, poverty. This is like our resolve of democratic socialism. And you will see that even after post-liberalization era, India has been spending very heavily on these sectors. है ना? तो इसलिए अंत्योदय योजना, Ayushman Bharat Yojana, Kisan Samman Nidhi Yojana. If you see all these ideas, that is just moving towards implementing the notions of democratic socialism. So Indian state is not shying away from its responsibilities of democratic socialism, even though we have moved towards an economic policy which is more geared towards liberalization and privatization. But as far as India's democratic socialism and its aim or goal was concerned, we still carry with that aim, that ambition, as well as that goal. Okay, so it has not been diluted. Okay, so we'll start the next class with this issue and we'll move to secularism then.